Hey guys, welcome back to the channel. This is our second video on the series of interview experiences where we'll be talking about different companies of off campus, on campus, and like this today we will be talking about Acolyte Digital, which Simran has recently cracked. So kudos to Simran, and without wasting time, let's get started. So starting with Simran, we can start with a brief introduction of yours. Like I'm Okay. giving a brief intro. Like says Simran, she is my classmate, my exam partners, class partner, online exam partner. Yes. So as you have got to know till now that yes, my name is Simran Mittal, and currently I'm in third year with this Shubham Kumar at Techno Main Salt Lake in Computer Science and Engineering Department. To be very precise, okay. And Okay, along with that, I'm also software engineer intern at Acolyte Digital, about which we are going to discuss it in today's session. okay, okay, Simran. So, like Acolyte Digital was it? It was a off-campus hiring, right? If I'm correct. Yes, yes, it was Yeah, off yeah. campus. So how did you got to know about the Acolyte Digital hiring? Like where can we see the updates and like how did you got to know that Acolyte is really hiring in off campus like kind of a thing? Okay, so firstly, there was a mail dropped by the college itself that Okay. Acolyte Digital is hiring. So college just dropped a message. It's hiring, and it has a platform EduThrill where we need to perform some assessments to have a further procedure to our interview process. So, ये off campus है, so you can get the updates on LinkedIn as well. And also, like if you search for ongoing hiring, like कौन से companies which is hiring right now, so you can get a list from there. And since इसका खुद का platform है EduThrill where it takes exams, so I think it's quite very easy to find out कि कौन सा hiring चल रहा है. Okay. Okay. So like starting with preparations. So like how did you prepare for Acolyte? Like means first of all, like was you really sure that yeah Acolyte is the place where you want to go and pursue? Like where it started? How did you start preparing for Acolyte? Like Yeah, so to be very honest, I did not prepare for Acolyte. Actually, I was preparing for placements, like because I was not very sure that which company would be my first company to start my career with. But it was Acolyte, and I'm not at all regretting my decision. So it was in the month of January 2021 where I started preparing for my placements. Coming to the most important section of the placement, that is data structures and algorithms. So the constant support was of basically two platforms. One is LeetCode and one is GFG. I did not focus on competitive coding, to be very honest, because that was not something my major concern. So LeetCode and GFG was more than enough to grasp or have a good command on my DSA concept. So I was through them. And coming to my to the theoretical part, which is DBMS, then comes your operating system. And there are a few more subjects, I guess, like data structures and algorithm में भी कुछ theory हो जाते networking, हैं. networking. नेटवर्किंग में पढ़ आई डिड नॉट स्टडी नेटवर्किंग एंड अगर इंटरव्यूअर पूछता भी था तो आई एम लाइक सर वो इसी सेमेस्टर में है आई हैवंट स्टार्टेड स्टडिंग सो आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दैट इट वाज लाइक ओके नॉट अ प्रॉब्लम सो वो पहले ही हट जाता था वो कोई भी इंटरव्यू हो Okay. तो वो पहले Okay. ही वैसे हो जाता था तो एंड दीज टू सब्जेक्ट्स के लिए द मेजर सपोर्ट व्हिच आई गॉट फ्रॉम was Java टी पॉइंट क्योंकि वहां पे यू गेट इंटरव्यू क्वेश्चंस एज वेल like DBMS interview questions be very helpful to crack interview. And yes, Java, oops को तो भूल ही गए. It was very important. Yeah. Yeah. Oops plays Oof. a Oof. major role in the interviews. And so this were some sources which really helped me to crack an interview. Now coming to like whether I was preparing for Acolyte or not. So before joining, like before sitting for the interviews, I was really very confused that whether I should go with Acolyte or not because there were many other companies that were coming on campus as well. Like it was Yeah. ThoughtWorks. Yeah. Then I It got was to know about TCS. Yeah, there were many good TCS, companies that was coming. Cerner. Yeah.
yeah, very good companies. And I also got some reminders from my college as well that Simran, still there are many companies, Cognizant, Persistent, dream companies are there waiting, and you're planning to go ahead with Accolade. Uh, see, according to me, the first thing that comes to the play is the first job that you crack, and it's very important, and it feels very happy and proud within you that yes, you have cracked the company, and that too when it's an off campus. It's Yeah, a yeah, of different course. level of Off satisfaction. campus have a different level of satisfaction. Yes. So I was very satisfied because, to be very honest to the viewers and to you, Shubham, the interview process was not at all easy for me. It was not at all easy. And it was a different turn which I got because the gap of the Guys, interview don't was get 15, scared, 15 okay? days. Yeah. Guys, don't Yeah. get scared. Yeah. The gap of the interview was 15 days. Like I Okay, started okay. my EduChill Yeah, one okay, from okay. Wait. Let's talk into detail in the process. Okay, so what was the process like? okay. Yeah, means first we used to register in EduTrail. Then how did it continue? Uh, Because I don't have any idea. I didn't pass the first round also. Yeah, okay. so No, it's fine. No, so EduThrill platform mein you just get an MCQ which is time based. Like 5 seconds or 10 seconds रहेंगे and you will get a question on the screen with some options and you just have to click it. Okay. And yeah, if it gets right, you score some percentage, and if it gets wrong, तो yeah. percentage So नीचे चला the जाता है. quiz used to have 5 questions at a time, right? As far as I Yes. remember. Yeah, Yes. five Five questions at a time, questions. and we need to complete at least 20 quizzes. Yes, you have to complete at least 20 quizzes and your percentage should reach 60%. If That you was don't fairly score impossible. 60, it was if you can't get a 60% in that 20 assessments, then you are not eligible for this company. Yeah, but it is not capped to 20 exams. So you can give more to increase your percentage. Okay, like Yes, this you is there. can give it more, but the point is that after 20 assessments, the percentage increase will be very less. So it may up Yeah, to 60 assessments to give 60%. It can go there. yeah, of Okay. course, of course, of Yeah. course. Yeah. So after that, what happened? After you completed After 60% and 20 I quizzes. was not at all expecting because it was like they only hire 200 candidates all over India at a time. Okay. Yeah. So I was not at all expecting because I think I had 25 or 30 assessments and I was like, what intelligent students hai. So I don't have any chance to get into it. Okay. I really thought ki assessment ke basis pe hota hai. And Okay. to my surprise, after 2 days, I got a mail that congratulations, Simran, you have successfully cracked the first round of EduThrill. And so we have scheduled a technical round for you at so and so time. So it was very Okay. fast, like 2 दिन में mail आ गया था मेरे पास. Okay. So technical round is the biggest scary. मतलब मेरे को आज ही वो scare करते हैं. कोई भी बोले ना कि सिमरन कंपनी में जाना है, मेरे को इंटरव्यू देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. But the most problem thing is वो technical round मुझे face नहीं करना होता because it's really मतलब nightmare है. It's really a Yeah, nightmare. yeah, Okay. kind of. क्योंकि you can't probable questions and अगर वो out of the box निकल गया ना तुम भाई से बस निकल जाओ भाई बाय बाय कंपनी ये ऐसे हो जाता है. Okay, Yeah. so technical round आया तो we like it was not me alone. There were many of them giving a technical round together and we were like कि सुनना technical round तुम्हारा भी है मेरा भी है. So अगर question same होगा तो help कर देना. I'm like पहले question दिखने तो दो पहले level तो पता चले. तो बहुत Okay. ज्यादा वो था कि technical round कैसा जाएगा. So to our surprise we got only one question. 8 questions. Okay. So it was a And online coding round or something like that. online coding round tha where your camera is Okay. on and you are being monitored, your screen will be monitored Okay. like pura Okay. proper tha because it was Yeah. not Okay. 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 So so it was a coding uh, round. Like second round it was a was a coding. coding. Yeah. Second round Okay. is a So coding round. So it was one question, it was a medium category question and the question falls under the topic graphs. okay. Okay, so So we were given did I it guess 1 required hour. optimization or like just normal brute force work? Means it was an See, algorithm based question or means implementation means like you no, need to optimize some. it was an algorithm based question. Cycle detection was the base of that question. Like you need to detect a cycle Okay. in the graph. So Okay. it Okay. was an Okay. algorithm based question. So I guess it was 1 hour timing for solving that question. And after 2 to 3 attempts, I successfully solved the question.
Okay. My coding round was Was there any language boundary or something like you cannot use Python or no, JavaScript? it was your choice. You can opt for C++, Okay. you can opt for Python, and you can opt for Java. I chose Python as always. उसके बिना High five. High five. उसके बिना I can't survive. So my choice Yeah. was Python. Yeah. Okay. So So after this, coding round हो finish. गया. Yeah. Yeah. Successfully done. Right. Successfully done. मतलब I was like कि भाई coding round खत्म हो गया. अब round नहीं होना चाहिए इतना. Yeah. Yeah. Yes. सो कोडिंग राउंड कंप्लीट हो गया एंड फिर आई थिंक बीच में ना 15 days कोई बातचीत नहीं था एंड ट्रस्ट मी 5 days आई वेटेड कुछ तो आएगा एवरी डे मेल्स चेक करती थी बट कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं आया हमको लगा कि नहीं हुआ भाई 200 स्टूडेंट में कहाँ से Yeah. हम आएंगे Okay. भाई नॉट एट ऑल Okay. पॉसिबल Maybe ओके time has सो been mattered or something like that. या Yeah. बिकॉज बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं एंड आफ्टर गिविंग Yeah. दैट इन्फैथॉन मुझे ट्रस्ट टूट गया इट वाज इट Yeah. वाज Of course. डिफरेंट तो बहुत सारे पैरामीटर्स ऐसे आ रहे थे कि भाई टाइम ज्यादा लग गया या कुछ ज्यादा टेस्ट केसेस फेल कर गया होगा उनके टेस्ट केसेस पास नहीं किए होंगे तो आई वाज लाइक कि छोड़ दे Anything. सिमरन Yeah. आपको लाइक छोड़ दे आपको लाइक नहीं हो रहा है तो Okay. सडनली आफ्टर मतलब 5-6 days हो गया था एंड मैं उसको भूल गई थी एंड फिर कॉलेज के स्टफ्स में इतना बिजी हो गए थे आई वाज लाइक एक कंपनी को लेकर तो नहीं बैठ सकते ना आई हैव Yeah. मेनी Of अदर course. कंपनीज Of ऑन course. प्रोग्रेस We need to move तो on. या तो आई नीड टू स्टडी फॉर देम तो Yeah. मैंने यहाँ से अपना अटेंशन एकदम मूव कर दिया एंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर माय नॉर्मल कैजुअल प्लेसमेंट after 15 days, exactly after 15 days, I got a call that Simran, you have successfully cleared the technical round from Accolade Digital, and we schedule a first technical round interview face to face on so and so date. And जिस दिन मेल आया था ना, उसके दूसरे दिन ही मेरा पैरा टेक्निकल राउंड Interview. हाँ सॉरी पैरा टेक्निकल इंटरव्यू था एंड Yeah. आई वाज एंड उस टाइम मैं शायद एक मीटिंग में थी या एक कॉल पे थी हाँ मतलब कॉलेज का कोई पर्पज से एक कॉल पे थी एंड वहीं पे मेरा मेल वो हुआ पॉप किया एंड माय रिएक्शन वाज स्टन यू वोंट बिलीव आई स्टार्टेड क्राइंग हम बोले कि मम्मी मेरा पहला राउंड का इंटरव्यू ऐसे अचानक शेड्यूल हो गया एंड दैट इज शी वाज वेरी कॉन्फिडेंट दैट टुमारो 3 PM यू हैव एन इंटरव्यू भाई आई वाज नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड मैं भूल चुकी थी आकोलाइट को मैंने उससे Yeah. कुछ देखा नहीं था वन डे में So कैसे so they एंड हमको love to play with surprises. वेरी मच एंड आई डोंट थिंक कि मतलब मेरे साथ ही ऐसा हुआ है शायद या फिर बहुत जन के साथ हुआ आई डोंट नो अबाउट दैट बट इनिशियली मतलब जो मई के पहले जो लोग ये चीज अटेम्प्ट किए थे ये अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है तो उन Yeah. लोग का ना 2 days में हो जा रहा था एंड 1 week में पूरा इंटरव्यू प्रोसीजर कंप्लीट एंड आई वाज लाइक Okay. कि मेरा 15 days क्यों लिया था सो आई Okay. डोंट नो कि उनका प्रोसीजर मतलब ऑनलाइन था तो शायद टाइम लग गया मे बी सो Maybe the दैट queue इज increased या or something like दैट इज नॉट आवर मैटर ऑफ कंसर्न that. Yeah. so how did I prepare in that one day so that was my biggest challenge I would say because पूरा track off track हो गया था and then coming back to it was a very good Yeah. वो था so yeah तो मैंने जावा टी पॉइंट पे गया एंड पहले सबसे पहले मैंने ऊप्स को कवर किया क्योंकि वो एक ऐसा कंसेप्ट है ना कि लाइक वो बेस होता है मतलब वहां से क्वेश्चन आते Anybody हैं can ask. Yeah, anybody can ask you that. एंड उसमें इतने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं तो दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट दैट एवरीवन शुड डू टू क्रैक अ कंपनी मे बी एनी कंपनी दैट इज इम्पोर्टेंट तो सबसे Yeah. पहले मैंने ऊप्स कवर किया देन ऊप्स के बाद आई डिड माय डीबीएमएस क्योंकि उसके क्वेरीज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेरीज वो लोग पूछते हैं एंड वी नीड टू राइट डाउन द क्वेरीज तो Yeah. क्वेरीज कवर किया देन उसके बाद मैंने ओएस देखा क्योंकि कुछ थ्रेड के क्वेश्चंस हो जाते हैं या फिर कुछ हमारे प्रोसेस और थ्रेड का हो जाता है फिर सेमाफोर्स हो गया या इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन तो वो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आई वेंट टू देम एंड लास्ट में मैंने डीएस एल्गो किया द रीजन क्योंकि उसको ज्यादा टाइम देना था तो बाकी जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट से पहले कवर कर लिया एंड फिर डीएसए में गई डीएसए में मैंने जीएफजी पे पास्ट ईयर क्वेश्चंस देखे कि आकलट किस तरह का क्वेश्चंस पूछता है एंड Yeah, उसको that मैंने is, गो I थ्रू think, किया very important, like going through GFG previous years or watching some YouTube videos of interview experiences like this one. It is really helpful. I will definitely recommend watching this. no it's really very good because or GFG is a very good platform okay so Okay. तो Okay. वहां पे हो गया so first interview very nervous as usual and but एक चीज था कि it's not my last opportunity like मेरे पास बहुत opportunities आगे भी आते हैं
तो बस ये दिमाग में था एंड कि सिमिलर तुम्हारा लास्ट अपॉर्चुनिटी नहीं है, बहुत आएंगे, यू आर जस्ट गिविंग अ ट्राई, ठीक है। तो मैं इंटरव्यू स्टार्ट्स एंड बंदा बहुत ही कूल था, मतलब वो बहुत पहले मेरे को वो कंफर्टेबल करवाया कि तुम नॉर्मल एक इंटर्न हो एंड हमको एकदम हार्ड फास्ट इंटरव्यू लेने नहीं आए हैं, जस्ट बी कंफर्टेबल विथ मी, ओके। सो एंड सबसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज आई वुड से कि अगर कोई जो भी वीडियोस देख रहे हैं, अगर आप लोग इंटरव्यू में जाते हो तो अपना इंट्रोडक्शन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाया करो, बिकॉज आपका इंट्रोडक्शन इज समथिंग जो आप पहले बोलते हो एंड वो बहुत Yeah. इम्पैक्ट करता है आपके इंटरव्यू। Yeah, and you know that your interview starts from the last line of your introduction. If you end your introduction at projects, the next question will be tell me something about your project. If you end at DSL Algo, the next thing will be some questions on DSL Algo. So the interview starts at your last line of introduction, which I think so. Like after giving so many interviews. No, you are very true. It is very important. So like जब हमारे कॉलेज में कुछ ग्रूमिंग क्लासेस होते थे तो वहां से मैंने इंट्रोडक्शन अपना फ्रेम कर लिया था। सो मेरा कोई सब्जेक्ट पे ना खत्म होता था ना प्रोजेक्ट, वो इट वाज अबाउट मी, तो वो मेरे पे खत्म होता था मेरा इंटरव्यू। सो इंट्रोडक्शन, सॉरी। तो ऐसे गया एंड देन ही स्टार्टेड दैट हाउ मच आर यू कंफर्टेबल विद डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। आई वाज लाइक एज एक्सपेक्टेड, सिमरन एक टेक्निकल इंटरव्यू में बैठी और डीएससी ना पूछे पॉसिबल बिल्कुल तो है नहीं। तो हो नहीं सकता। एकदम हो नहीं सकता। तो तो बंदे ने स्टार्ट किया, एरे का क्वेश्चन से स्टार्ट किया। तो एरे का क्वेश्चन पूछा, फिर उसका 2-3 वेरिएशन पूछा, फिर उसको ऑप्टिमाइज करने का पूछा एंड मतलब वो एक ही क्वेश्चन स्टार्ट किया एंड ही कवर्ड 3 to 4 क्वेश्चंस देयर। Yeah, Do I need to say the question in detail? no. Like yeah, it means array हाँ, so normal question, correct? Medium level. हाँ, वो स्टार्ट किया नॉर्मल इजी लेवल से स्टार्ट किया एंड फिर उसको वो मीडियम लेवल पे लेके गया एंड फिर उसके ऑप्टिमाइजेशन पर। तो वो एक ही क्वेश्चन पे 4 क्वेश्चन फ्रेम कर दिया था Yeah, एंड okay. टाइम लगा बट आई सक्सेसफुली आंसर्ड। सो उसमें मेरे को कम से कम 20 मिनट्स वो प्ले किया उसके साथ, आर्य के साथ, मेरे साथ मीडियम लेवल क्वेश्चन। एंड देन ही केम टू उप्स, सारे उप्स का कंसेप्ट क्या क्या होता है, उप्स इंपॉर्टेंट है। तो फिर उप्स के बाद वो सीधा आया एसक्यूएल क्वेरीज पे कि आप ये क्वेरीज मेरे को लेके दिखाओ, वैसे वैसे करके। क्वेरीज के बाद बोलता है कि लेट्स डू अनदर वार्म अप। हम बोले कि अब ये क्या पूछेगा, ही अगेन केम टू डीएसएल। आई वाज लाइक नो प्लीज वापस डीएसएल को। आई वाज लाइक ओके एंड दिस टाइम ही केम टू ट्रीज, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट सब छोड़ के सीधा ट्रीज। You know, like trees are a part now where nobody means, which I think it is very hard to be comfortable with. We can be comfortable with graphs, but comfortable with trees is, like something. It's something. बिकॉज वहां से आप कुछ भी क्वेश्चन बना सकते हो, आप सोच नहीं सकते वहां से कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, और कोई भी चीज में Yeah. ट्री लगा दो। मेरे को लगा कि गया, हो गया मेरा, वो ट्रीज पे आ गया बंदा, अब हो गया मेरा इंटरव्यू। I was Yeah, like, like, okay, sir. a small keyword can change a graph question to a tree question, and the time Exactly. complexity will fall like this. Like you're working with Exactly. cube, yeah, you're working with cubic, it can be solved in log n. So that particular line, I was like sweating like anything, and like ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं क्रैक होगा ना, कोई बात नहीं, it's okay. It's okay. So to my surprise, it was traversal. Okay. शांति था थोड़ा, ओके। सो बट उससे भी वो नहीं था। पहले तो मेरे को नॉर्मल ट्रैवर्सल करवाया, फिर बोला कि लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल करो, फिर उसको जिगजैग में कन्वर्ट करो। लाइक उसमें भी एक क्वेश्चन में ही कवर 3 डिफरेंट क्वेश्चन। आफ्टर गिविंग 2 to 3 अटेम्प्ट्स, लाइक बन गया था क्वेश्चन। लाइक आई वाज एबल टू एक्सप्लेन इन द लॉजिक कि सर कैसे कैसे हम इसको यूज करके प्रोसीड करेंगे। बोला कि दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन। लाइक ओके सर, कोड इट आउट। लाइक ओके सर, आई विल ट्राई टू कोड इट आउट। तो मैंने ना स्क्रीन को स्प्लिट कर दिया क्योंकि बहुत अच्छे से समझा दिया था कि सर हम ऐसे 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 करेंगे। एंड ये वाला जो क्वेश्चन था जिगजैग वाला, मैं वो एक दिन पहले ही वो प्रीवियस ईयर इंटरव्यू क्वेश्चंस में मैंने जीएफजी में देखा था। तो मैंने कोड नहीं किया था बट मैंने सिर्फ लॉजिक पढ़ा था, तो मेरे को लॉजिक अच्छे से पता था। तो मैंने वो स्क्रीन को स्प्लिट करके, उन्होंने जैम बोर्ड शेयर किया था, मतलब वहीं से, ताकि दोनों जन उस पर ट्रैक रख सके। तो उसी जैम बोर्ड में मेरे को वो कोड लिखने के लिए कहा। तो वहां पे मैंने अपना एक्सप्लेनेशन से अपना कोड स्निपेट, वो सिर्फ स्निपेट लिखना होता है, उस स्निपेट को लिखा एंड वो 2 मिनट लगाए। वो तो लेट मी एनालाइज योर कोड। हम बोले कि अभी ऑप्टिमाइज करने बोला या कुछ बोलेगा तो इट विल बी अ डिफिकल्ट टास्क फॉर मी। Yeah, I'm done. Yeah. But to my surprise, he was like, this algo will not work. बोले सर,
लाइक आई विल ड्राई रन इट. तो मैंने अपने आप अपना कोड को सही प्रूफ करने के लिए पूरा ड्राई रन करवाया उस कोड को. एंड फिर ही वाज लाइक आर यू श्योर दिस विल वर्क. बोले सर आई एम गेटिंग, बोले और ट्रीज के लिए वर्क करेगा. तो मैंने एक दो ट्रीज और लेके दिखाया. एंड देन ही वाज लाइक कि आई जस्ट वांटेड टू चेक योर कॉन्फिडेंस. इज लाइक ओके. सो Okay. ऐसे भी इंटरव्यू टर्न अप हो सकते हैं. तो Yeah. फिर वो लास्ट में ही वाज लाइक इट्स ओके. तो फिर बोला कि आई एम डन विथ माय साइड, डू यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन. तो मैंने उनसे एक ही चीज पूछा था कि सर आई बेसिकली नीड माय फीडबैक, लाइक नॉट इन दिस, if I appear for any other interviews, what are the my weak sections and what are the things I want to improve on it, because it was Yeah. not my last interview, I Yeah. guess. तो उन्होंने Yeah. कहा कि फीडबैक फ्रॉम दैट साइड. तो आई वाज हैप्पी. तो मतलब मुझे मतलब इंटरव्यू देने के बाद ऐसा नहीं था कि होगा या नहीं होगा. दैट वाज टोटली डिपेंडेंट ऑन द इंटरव्यूअर, बट आई The वाज हैप्पी कि interview. आई गॉट अ पॉजिटिव फीडबैक. या Yeah. Yeah. Okay. फीडबैक वाज गुड. So yeah. So दैट्स हाउ after माय your फर्स्ट राउंड. technical interview, then after that there was one more आफ्टर technical round टेक्निकल, or directly HL? वन मोर टेक्निकल राउंड. इतना जल्दी नहीं लेगा ना. Okay. Okay. तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का. Okay. ओके. सो इसके लिए भी 5 days हो गया, 6 days हो गया. हमको लगा कि नहीं पसंद आया. 200 बच्चों में कहा मेरा सिलेक्शन होगा. मतलब ये दिन आपको लाइक से सेकंड राउंड ऑफ टेक्निकल का मेल आ गया था. मैं जब इंटरव्यू देने गई, मेरा अब इंटरव्यू 1.5 hour चला, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 hours. एंड वो पूरा थ्योरेटिकल इंटरव्यू था, पूरा थ्योरेटिकल इंटरव्यू. सी Okay, that sounds scary to me, like kind of haunted house, haunted it interview. is a kind of haunted or because it was something which was out of my expectations as well. You won't matlab, to be very honest, the portions that were covered was language C, Python, pointers, SQL, OS, oops, like every theoretical thing, every skill that was written on my CV was asked. Matlab, my CV was completely covered in my technical round, completely covered. Right from my Okay. school ka percentage to my skills, everything was covered in technical round. Okay. And No, he that is was pretty too good, you know. wrong. Yeah, that is Yeah, like true. they And actually took the time to go through your resume. exactly. And I would suggest कि कभी CV में false मत लिखा करो, because if you write something very false in your CV, you will get into trouble. So write something, भरना नहीं होता है CV को. Keep it minimal, but keep it to the point. This is what I have learned from that interview. So luckily मेरा interview का मतलब मेरा CV बहुत minimal था. And उसमें जो भी चीज था, he touched every section. And तुमको पता है मेरा most of the question was like, sir, I have no idea, sir, I'm not sure. He was comparing structure and classes, and trust me, मैंने theoretical theory पढ़ा ही नहीं. मैं pointers का concept, I was like, ये pointers में इतना confuse क्यों कर रहा है हमको? Array of pointers, Yeah, ये pointers. pointers is a very confusing concept. अगर interview चाहे तो you it will make you go round and round in cycles. I went till down, and वो down ही हो गया. वो at the end I was like, sir, I'm sorry, I can't. वो एकदम down चला गया. So ऐसे करते मतलब I would say 30 से 40% of the questions was like, sir, I don't know. Yes, sir, I don't know. I have no clue. I have no. अब बहुत से wrong answer दिए तो sir was like कि are you sure? हम बोले no sir, ऐसे होगा. Are you sure this is the language? बहुत खराब गया था. इन शॉर्ट बहुत Okay. खराब गया था. मतलब मेरे को नहीं लगा था कि इसके बाद मेरा फर्दर कॉल आएगा. तो मैंने वहीं पे मतलब मैं तो वैसे 5 दिन वेट तो किया था पहले इंटरव्यूज राउंड में, बट इसमें मैंने वेट ही नहीं किया क्योंकि एंड आई क्राइड आफ्टर Yeah, माय इंटरव्यू, because टू बी ऑनेस्ट. okay. Okay. क्योंकि ये You need some अनएक्सपेक्टेड water? था. नो You नो need इट्स some water. Okay. नो नो इट्स. सो आई लिटरली क्राइड आफ्टर माय इंटरव्यू बिकॉज मैं डीएसए एक्सपेक्ट कर रही थी एंड वो लोग पूरा थ्योरेटिकल चला गया था. एंड थ्योरेटिकल मैं नहीं करी थी प्रिपेयर, टू बी ऑनेस्ट, अच्छे से नहीं किया था. तो बहुत खराब गया था ये इंटरव्यू राउंड. तो फिर मैंने और कंपनीज के लिए पढ़ना चालू कर दिया था, बट फिर कंपनीज आ नहीं रहे थे, ऑन कैंपस भी नहीं थे, ऑफ कैंपस भी नहीं थे, तो छोड़ दिया ऐसे ही, खत्म. So you was in kind of a chilled situation to like Chill नहीं था.
टेंशन आ गया था कि कुछ तो आता नहीं है, कैसे कंपनी का इंटरव्यू क्रैक होगा. Okay. So when did you get your Yeah. HR round? Like after that? 15 days बाद. Okay. Okay. So how was your HR round? Yeah, so 15 days बाद I got a call that Simran, you have an HR run scheduled today at 1 p.m. and the call was at 12 p.m. Okay. 1 hour के डिस्टेंस पे आया था कि 12 बजे कॉल किया कि आज 1 बजे आपका HR राउंड है. तो हम बोले कि मैम 1 बजे. तो फिर मैम वाज लाइक कंफ्यूज, नो 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 नॉट 1 p.m. लेट्स मेक इट 4:30. लाइक फाइन फॉर टाइम Okay. तो मिला. फिर 4:30 एक्स्ट्रा. उसके बाद आई वाज लाइक कि भाई कंपनी के बारे में चाहिए, तो स्टिकी नोट्स खोल लिया लैपटॉप में, एक जगह अपना इंट्रोडक्शन, फिर क्या क्या बोलना है, क्या बोलना है? वीकनेस, स्ट्रेंथ, जितना भी एचआर का क्वेश्चन था जावा टी पॉइंट में सब पढ़ लिया. एंड सारा स्टिकी Okay. नोट्स ना ऐसे चिपका दिया, क्योंकि कुछ पूछेगा तो ऑन स्पॉट तो बोला जाएगा नहीं, तो कुछ हाँ देख सकते हैं. तो हाँ. एचआर राउंड स्टार्ट हुआ. So, मतलब the interviewer was the one who was contacting me throughout the process, which was Okay. Madam Rachna Sahani. Yeah, so she was only my HR and she took my interview round. The Okay. HR round was like, yes, Simran, isko bolte hai HR round dena, because every question was to the point. She was impressed by my introduction. She was happy with my way of answering. She was impressed by my confidence. Yeah, She of was course you are a good speaker, so she will get impressed. yeah, and she was surprised to see that I know much more about Acolyte, because मैंने पूरा history निकाल दिया था. भाई बता दो कि इतना पता है मेरे को इसके बारे में. So Okay. फिर after at the end she discussed about the package structure and the bond and security, all the things. Okay. And she was like, within 1 week you can get you will get a mail which you need to fill it up. I was like, ma'am, Okay. a confirmation mail, so that you will get to know through your mails. मतलब वहां पर भी सस्पेंस छोड़ दिया कि अभी भी कंफर्म Okay. नहीं था कि आप सिलेक्ट हो या नहीं. बट आई वाज प्रीटी श्योर, मतलब इसके बाद आई Yeah, वाज yeah. कॉन्फिडेंट कि If भाई you मेरे पास want, मेल आ जाएगा. because if they're discussing, the package with you, then it is Yeah, like 95% chance that हो जाए. but still Okay. 5% तो दबाना नहीं चाहिए ऐसे. Yeah, तो and मैंने then उसको finally नहीं you got दबाया. the mail. You finally got the mail after 15 days. Am I No, right? no, 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 no. I got the mail after 5 days. 5 Okay. Yeah. Okay. So finally, I got into Acolyte, and yes, I'm here. Okay. So, Simran, like, just a small question that how much do you think that, data structure, algorithm, competitive coding was important for Acolyte? Like, if I would ask you to rate it from 1 to 5, the importance of data structure, algorithm, and competitive coding for the Acolyte Digital in 1 to 5, how much do you rate it? Okay. So to my, if you ask my opinion, see, it depends from interview to interview, because I have seen Acolyte digital interviews where, see, my round two was totally theoretical because my interviewer wanted to interview on that. But Yeah. there are some other candidates and my classmates whose interview was totally on DS Algo, totally on DS Okay. Algo. So Okay. I would suggest that DS Algo is very important. If you ask me to rate me for even Acolyte Digital, I would give it 4.5, because DS Algo Okay. was Okay. important, be it theoretical point of view or be it coding it out. It is important for Acolyte Digital, and you should have a good command on it. I'm not talking about competitive coding. If you're not so good in competitive coding, but if you are a beginner in competitive coding and your DSA concepts are really very good, it's more than suffice to have it. Okay. It's enough. And what about projects? Like, do they give importance to college projects? Yeah, in my first technical round, I got to my interviewer interviewed me on my 2 projects that I had on my CV. So yeah, he interviewed on my CV, on the projects, and in the second round also he just asked me to give a brief on my project. He didn't got into Okay. to details. जो Two पार्ट उनको details. लगा कि पूछना चाहिए कि हाँ इसमें ये ऐसे काम किया, एंड मेरा बहुत सिंपल प्रोजेक्ट था, तो मैंने बहुत हाई फाई प्रोजेक्ट नहीं बना रखा था, क्योंकि पता है वो पूछेगा तो फंसेगा. तो उसी पे जो उनको लगा पूछना चाहिए उन्होंने पूछा. अ शॉर्ट डिस्कशन we had. So, Simran, I think you are like that much. That was pretty much about your interview experience. Yes, that was about my interview experience. Okay. So, you are working there as of now, right? So, Yes, yeah, yeah. So, currently give us some insights, man. Like, how is the work culture, like yeah, a working yeah. environment, work-life Mhm. balance, Yes. So the first thing is things are online, so
we haven't connected with our other colleagues as of now. But like we had a introductory session. That was the only video conference meet we had for the first time, and not yet any other meets we haven't organized yet. So yeah, the work-life balance is really very good. Like it's not like we have to work whole day 9 to 7. वैसा job बिल्कुल नहीं है. It's on comfortable Okay. hours. Just अभी तो training period चल रहा है because we will trained on the technologies we'll be working on further. So we Okay. training period चल रहा है and we get regular assignments which we have to submit within deadlines. And That is pretty good. yes, that is very good. And I also got to research about it that it's a product-based company. I'm the leading one of the very good companies to start your career with. So without any questions and without any doubt, and just having and trusting all the resources and all the research and all the reviews that I got into it. The one question that was still hitting my mind was, see, the role was of software developer, like software engineer. So it's a very vast category and बहुत Yeah. सारे roles आते हैं software engineer के अंदर. Yeah, So of मेरा course. major concern यही था कि like क्या काम मेरे को मिलेगा. तो मैंने अपने Yeah. सीनियर्स लोग से पूछा था तो उन लोगों ने कहा कि इंटर्न स्पेसिफिक कुछ नहीं होता है. You have to work on real time projects and that will be deployed. So I was like, if it is the case, that is the best part that I could do because बाकी Okay. में you never know कि Yeah, तुम of किस में course. work करो. So to my surprise, it was really very true, and we are being trained on the technologies that we'll be working on. And our 2 weeks training has been completely done. We have submitted our assignments, and we have learned the new technologies to the basics, which we'll be working on. And अब projects assign होंगे हमें. So हम लोगों ने वहाँ Okay. बात किया था, तो वहाँ के जो mentor उन्होंने कहा कि intern specific इस company में कुछ नहीं होता. You will be working on the projects, So on and the that will real be time into deployment. project. Okay, okay. So So Simran, that you is would the like to best. say something for, some students who are preparing for Acolyte Digital right now, like right now. The only message that I would like to give is ki your hard work is very important, your dedication is important, but the third thing which you can't prepare on yourself is your luck. See, I have seen people changing, having a great transformations in their life. The luck is a very important factor. If it is with you now, you can crack a very big company with just 2 questions. And if your luck doesn't support you now, you can't even crack a small company with thousands of questions. So just Yeah, trust of yourself and don't lose hope because there are people who struggled a lot. In fact, very good students, even good than me and Shubham, I guess, they have struggled a lot to get into a company. Exactly. So Exactly. at the right time, you'll get the right thing. Just be dedicated, put in efforts, do the hard work, and all the best. Yeah. So that was it, guys. So if you like the video, क्या क्या बोलते हैं? Simran, to Hit the बोल. like button. And Hit the like button. Don't forget to subscribe our channel and press the bell icon for regular updates. और भी कुछ बोलते हैं क्या? yeah, and comment, share, and follow the video. And you have a, Chota bhai. Hello. Yes. Say hello. Yeah. Hello. Done. Yeah. Bye-bye. Chalo. Done. इसको काट देना. Okay. इसको No, काट देना. no, it will be there. Okay. So, tada guys. तब Okay. तक के लिए best So- of luck for your interviews, companies, and don't get scared, man. कहीं ना कहीं लग जाएगा. Life चलती लग रहती है. जाएगा. Yeah, that is for Okay. sure. Okay. So, तब तक के लिए Okay. sayonara. Yeah. Bye. 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 Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.